Hello everyone. Welcome to Passion Studies MCQ series for Term 1. My name is Dakshant Sharma and आज इस टेस्ट सीरीज़ में आपको दिए जाएंगे कुछ MCQ क्वेश्चंस. आपको 10 सेकंड्स के अंदर आंसर देना है एंड लास्ट में मैं बताऊंगा आपको सारे करेक्ट आंसर्स. ये है चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम बुक इंडियन सोसाइटी एंड द चैप्टर नेम इज़ पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, सोशियोलॉजी क्लास 12th. राइट. तो आप सभी को पता है कि टर्म 1 होगा जो आपका क्लास 12th में, उसमें आपको MCQ आएंगे फॉर 40 मार्क्स. राइट. तो इसीलिए हम यहाँ पर MCQs कवर कर रहे हैं. एक ऑलरेडी सीरीज़ मैंने बना दी है, उसमें आपको 10 MCQs फ्रॉम बुक 1 एंड 10 MCQs फ्रॉम बुक 2 ईच चैप्टर मिल जाएंगे. तो वो भी आप देख सकते हैं. ये दूसरी सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ताकि आपको और हम MCQs प्रोवाइड कर सके. तो चलिए शुरू करते हैं. Question number 1. The sociological perspective on race. Options are: begins with the assumption that races are based on easily classified differences. Second, considers race a social construct, not an absolute. Option number 3, neither A nor B. Option number 4, both A and B. तो आपको यहाँ पर 10 सेकेंड्स मिलते हैं. आप क्वेश्चन देख सकते हैं एंड यू कैन आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ऑल राइट. तो आई होप आपने ये आंसर लिख लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Ethnic groups. Option number 1. Are groups identified on cultural grounds? Option number 2. Are based solely on nationality? Option number 3. Occupy a small territory? Option number 4. Unlike racial groups, are socially constructed. Your time starts now. Alright, let's move to the next question. Question number 3. Which of the following is not one of the properties of a minority group identified in your text? Option number 1, racial or cultural self-consciousness. Option number 2, hereditary membership. Option number 3, a high degree of marriage outside of the group, that is exogamy. Option number 4, oppression at the hands of a dominant group. तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. All right. Next question, question number 4. How does racial and ethnic stratification differ from other forms of stratification? Option number 1. Racial and ethnic groups often have the potential for carving out their own independent nations from the existing state. Option number 2. Racial and ethnic stratification is harder to eliminate than other forms of stratification. Option number 3. All other forms of stratification grow out of racial and ethnic stratification. Option number 4. All of the above. Your time starts now. All right. Next question, question number 5. Prejudice. Option number A refers to hostile behaviors exhibited by someone who has been offended by a member of a group. Option number B is an attitude of aversion and hostility towards the members of a group simply because they belong to it. Option number C cannot not exist in someone who does not discriminate. Option number 4, that is a feeling a minority individual has towards his or her own minority. Your time starts now.
ऑल राइट, तो आपका टाइम होता है फिनिश यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, symbolic racism, option number 1, can also be termed racial reconciliation. Option number 2 is the same as traditional racial prejudice. Option number 3 is a reflection of whites' concern that further reductions in racial inequality will result in loss of the special status that whites in the United States have enjoyed over the years. Option number 4 has no impact on whites' racial policy attitudes. Your time starts now. Time is over. Question number 7. Which of the following is true regarding discrimination? Option number 1. In order for a person to discriminate, he or she must hold prejudicial attitudes. Option number 2. Discrimination is an action. Option number 3. Discrimination is not a form of racism. Option number 4. None of the above. Your time starts now. Time is over. Question number 8. Institutional discrimination, option number 1, does not include environmental racism. Option number 2, occurs because equality of opportunity causes equality of outcome. Option number 3, occurs in part when gatekeepers admit others like themselves to positions of privilege, prestige, and power. Option number 4, none of the above. Option number 4, none of the above. Your time starts now. Time is over. Question number 9. When the Schmidt family came to the United States in 1890, they attended school to learn the language and customs of their new country. They subsequently changed their name to Smith. The case of this family illustrates A. Assimilation, B. Continued subjugation, option number 3, legal protection, and the last option, pluralism. Your time starts now. Your time is over. The last question, question number 10. The coexistence of diverse groups is called option number 1, gatekeeping, option number 2, pluralism, option number 3, assimilation, option number 4, continued subjugation. The time starts now. Your time is over. So these were 10 questions for today's test. Next 10 questions from the same chapter will be coming in the next part. अब हम डिस्कस करते हैं इनके आंसर्स। जो ये आंसर्स मैं आपको बताऊंगा ये आपको फाइंड आउट करने हैं, एनालाइज करने हैं और ऑब्जर्व करने हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज ये क्वेश्चंस थोड़े आपको एक्सटर्नली मिलेंगे ताकि आपकी रिसर्च स्किल्स एंड थोड़ा आप फाइंड आउट करें इस चैप्टर से ज़्यादा जो आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कंसिडर्स रेस अ सोशल कंस्ट्रक्ट नॉट एन एब्सोल्यूट। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज आर ग्रुप्स आइडेंटिफाइड ऑन कल्चरल ग्राउंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑपरेशन
at the hands of a dominant group. Then coming on question number 4. Question number 4 का सही आंसर है option number 3, that is all other forms of stratification grow out of racial and ethnic stratification. Then question number 5 का सही आंसर है option number 2, that is an attitude of aversion and hostility towards the members of a group simply because they belong to it. Right? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, that is a reflection of whites' concern that further reductions in racial inequality will result in loss of the special status that whites in the United States have enjoyed over the years. Then coming on question number 7, इसका सही आंसर है option number 2, that is discrimination is an action. Then coming on question number 8, question number 8 का सही आंसर है option number 3, that is occurs in part when gatekeepers admit others like themselves to positions of privilege, prestige and power. Then coming on question number 9, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, that is assimilation. And the last question number 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, that is pluralism. Right? तो आप मुझे अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना स्कोर बनता है, कहाँ आपकी गलतियाँ हुई, और आप फर्दर किसी भी आंसर की एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर सकते हैं ईदर इन द लाइव चैट और इन द कमेंट सेक्शन. राइट? डेली आपके इस तरीके से टेस्ट होंगे, मतलब ऑनलाइन हम यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आई विल बी डिक्टेटिंग यू क्वेश्चंस. आपको वैसे ही चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं. देन आई विल बी टेलिंग द आंसर्स. आपको मैच करने हैं, अपना स्कोर बताना है. राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. पार्ट 2 में नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो. ये क्वेश्चंस अगेन मैं बोलूँगा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से आए हैं, या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा हम बोल सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट को इनडायरेक्ट वे में पूछा है. राइट? कॉन्सेप्ट वही है, जस्ट लैंग्वेजेस चेंज, सो दैट आपकी प्रेपरेशन एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए MCQ बेस्ड टेस्ट के लिए, जो कि टर्म 1 में होगा. With this, I end the video. Share this video with Sociology students class 12th and do not forget to subscribe Passion Studies. Thank you again. For doubts, queries, you can ask me on Instagram or Twitter. Links सारे आपको description में mentioned है. Telegram group आप join कर सकते हैं for latest updates. Thank you so much again.